everyone, good evening. I'm Purnima from Fertility Dost, and today we have Dr. Neha Gupta with us. She is Director and Senior Infertility Specialist, MediWorld Fertility. Good evening, ma'am, and welcome to our platform. Good evening. Thank you. So, today we are going to talk about A to Z of pregnancy. What is pregnancy? We all know. But yes, what important points, what important tests, or rather, I would suggest that what important tips you should keep in mind while planning this beautiful journey of motherhood. So, these tests, these tips, today we are going to discuss with Dr. Gupta. So, over to you, Dr. Gupta. What all you suggest when the first word comes in our mind? Yes, I am ready for my motherhood journey. Hello, everyone. I'm Dr. Neha Gupta. I'm a gynecologist and an infertility specialist. So, today, as Mrs. Purnima said, we are going to talk about A to Z of pregnancy. So, the first thing that any couple comes to us uh, for any pre-marital counseling, we always tell them to discuss with their doctor what exactly is their plan, you know. So, if any couple is planning for pregnancy, there are certain things they should keep in mind. The first thing being, what are the fertile days? What are the safe days? Um, to understand the menstrual cycle for a woman is, I think, the most primary thing that a couple should know. So, if your cycle is regular, we say that the ovulation happens 14th day prior to the next menses. So, if any couple is planning for pregnancy, we tell them that what is the fertile period. So, which ranges from day 10, 12 to day 17, 18th of their menstrual cycle, if the cycle length is about 28 to 30 days. Now, if any couple says that we have any menstrual irregularities, the period is getting delayed, or the period is coming a little early, say she has a 22, 23 days cycle, that also is considered as normal. And then we say that the predicted time of ovulation is happening a little early. So then we tell them, we advise them to have contact somewhere around probably 10th, 11th day of their cycle rather than waiting till 15, 16th day. So the most important thing I feel that a couple should understand is the menstrual cycle of the woman. How is it? What is the length of it? How many days do they bleed? And when do they expect the next cycle? Then there are certain factors like if there is any sexual dysfunction. So to rule out all those things, we ask these kind of history from the couple that they are able to have a regular intercourse and what is the frequency of intercourse so that we are able to guide them better. Then the general advice related to their weight, their diet, and exercise is what I feel a doctor should talk about. So a couple should have a healthy lifestyle. They should have probably 3 to 4 days of some exercise in a week is good enough, and which should last for probably around 45 minutes to an hour. And eating healthy food, reducing the junk, reducing the cheat days to probably 1 or 2 days in a week is what we advise. And any excessive weight gain or smoking, alcohol consumption, all those things they can freely come and discuss so that we are able to tell them and guide them that what are the complications one can foresee if in case if we are regularly having alcohol or we are smoking or there's any tobacco chewing related other health hazards apart from pregnancy as well. So I feel if any couple is planning to conceive, if they see a doctor, then we are able to just guide them a little better and reduce the stress factor and probably start them on certain supplements like folic acid, which reduces the chance of congenital abnormalities in the baby. Right. So, ma'am, आपने बोला ovulation day tracking is very important. So, one thing, जो market में ovulation kits available हैं, so can we rely them on them fully? Like, what are the chances देखिए, of या their?
हाँ जी। See, we don't advise ovulation kits for all. हम सबको नहीं बोलते. Every couple should not use ovulation kits. Because अगर आपकी साइकिल रेगुलर है एंड वी नो कि आपकी पीरियड 28 डेज में 30 डेज में आता है, तो हम वेरी सेफली से कि आपका ओव्यूलेशन समय पर हो रहा है. आई मीन यू आर ओव्यूलेटिंग समवेयर अराउंड 14-15th डे. तो उसमें हम अगर आपको टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं, आपको 12th डे टू 18th डे ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं, दैट इज गुड इनफ टू कॉज प्रेगनेंसी. बट इन कपल्स हु आर स्ट्रगलिंग, जिनको लंबा समय हो गया है, मोर देन 1 या 2 years हो गए हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उन कपल्स में अगर हम ओव्यूलेशन किट्स से उनकी मदद करते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस फैक्टर कम होता है. सो ओव्यूलेशन किट जो होती है, LH, there is a hormone in the female body which is called a luteinizing hormone, LH. ये LH किट्स होती हैं यूरिन में जो ओव्यूलेशन चेक करती हैं. अगर हम यूरिन को मॉर्निंग सैंपल से LH किट में डालकर चेक करें और उसमें सेकेंड लाइन आती है, दैट इंडिकेट्स that the egg is about to get released in another 24 to 48 hours. So that would be the best time to be with the husband. And probably peri-ovulation time, around the time of ovulation, if they are having contact, the chances of pregnancy is higher. So these kits are reliable, but in certain cases, we can miss the ovulation with these kits. So they are not 100% reliable, but they're reliable to an extent of, say, somewhere around 80%, which is a very high number. Or the Right, other way to check ovulation is only by ultrasound. So you cannot do ultrasound every cycle. That is why we right, recommend जिनकी शादी को कम समय हुआ है, जिनके बाकी और प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर वो LH किट को यूज करते हैं तो दे कैन आस्क द डॉक्टर हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, हाउ फ्रीक्वेंटली टू यूज, किस दिन से शुरू करना है, रोजाना करना है, ऑल्टरनेट डे करना है, किस पेशेंट की साइकिल के अकॉर्डिंग कब सजेस्ट करा जाता है ओव्यूलेशन किट्स. अगर वो सही जानकारी के साथ ओव्यूलेशन किट को यूज करते हैं तो they are able to predict ovulation to quite an extent. एक मैम इससे रिलेटेड वन मोर थिंग, लाइक व्हेन यू सजेस्ट दैट yes you should maintain the relationship according to your ovulatory phase. So, how frequent one should maintain the relationship? Because often we have cases that ladies saying, "Yeah, I need to visit my husband who is working in another city. So, I'll visit him only during my ovulation days." So, is it the correct pattern? Because आप पूरा महीना कहीं पे relation maintain नहीं कर रहे हैं, and for that 2 or 3 days you are into this relationship. So, is it healthy thing to do, or yes, as a norm we should meet one's partner once in a week or twice in a week? Is this the counterpart for healthy relationship? Ma'am, see, we are in 21st century, and the problem in this time period is that the couple is working. They are not at home. Earlier, the men should used to work, women used to be at home with their husbands. अभी के सिनेरियो में we cannot tell the lady not to go for work and just be at home just because they are desirous of pregnancy. So Right. that is not the correct thing to say. If we say that the circumstances are ideal, जहाँ आप husband wife साथ एक साथ रह सकते हैं, and एक healthy relationship जिसमें हम कहते हैं frequency of intercourse normal couples में up to 2 to 3 times a week होता है. So if that kind of relationship you are able to maintain, it is excellent. Then we do not ask you to track your ovulation time, because वो more or less आप ठीक ही your relationship is Right. going just fine. It's just a matter of time. If all is okay, pregnancy should click in 1 year's time. बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क related issues, or probably because of some familial circumstances. किसी के पेरेंट्स के साथ रहना है, किसी को वर्क रिलेटेड दे कैन नॉट स्टे टुगेदर. ऐसे केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप साथ ही रहेंगे तो ही प्रेगनेंसी होगी. तो ही होगा. इफ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट ओव्यूलेशन, अगर हम उनको ये बता सकते हैं कि ये आपका ओव्यूलेशन का समय है और अब आप
इन 3-4 दिनों के लिए हस्बैंड के साथ रहें, तो आई फील इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू, बिकॉज प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट मेंस्ट्रुअल एग नहीं होता शरीर में। अगर नहीं। उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहे हैं तो उससे प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम है। तो अगर कोई ऐसे circumstances हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, couple cannot stay together because of whatever problems they are facing, so then we can very well guide them and tell them कि ये ठीक समय है, आप दोनों साथ रहें 3-4 दिन, जैसे भी मैनेज कर सकते हैं करें। ऐसे हम बहुत कपल्स की मदद करते हैं जो एंड वी गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। we just have to counsel राइट। them well, उनको समझाने की जरूरत है कि इस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेनी है। अगर वो कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी के लिए सोचेंगे और सोचेंगे 1 महीने हस्बैंड के साथ रहने से 100% प्रेगनेंसी आएगी, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी आने की संभावना, द फेकंडिटी रेट फॉर पर साइकिल इज ओनली अबाउट 10 to 12%। तो अगर 10 कपल 1 महीने में कांटेक्ट करते हैं, उसमें से खाली 1 या 2 कपल्स को पहले महीने में प्रेगनेंसी होगी। बट अगर हम कपल साथ रहे तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी ठहर जाती है। और अगर 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी ना ठहरे तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। देन वी कंसिडर इट एज इनफर्टिलिटी। उसमें भी एज वाइज वी डिमार्केट। अगर किसी लेडी की एज 33 ईयर्स से कम है तो हम उनको 1 साल तक कोई टेस्ट ना। एंड अगर किसी कपल वुमन की एज 33 ईयर्स से ज्यादा है तो हम उनको 6 महीने का ही समय देते हैं, बिकॉज हर द बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग है। हम उनकी उम्र के राइट। साथ उनकी एग की क्वालिटी जल्दी जल्दी गिरती है, तो हम उनको फिर बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं। 6 महीने तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ ओव्यूलेशन पीरियड समझते हुए नॉर्मल कॉन्टैक्ट के लिए कहते हैं। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती है देन वी वर्क देम अप, उनके सारे टेस्ट कराकर ये पता करते हैं कि क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, और दवाइयों के जरिए या वट एवर ट्रीटमेंट दे नीड उसके जरिए उनकी मदद करते हैं। So thank you, Dr. Neha. Thank you so much for Thank you coming so into much. our session. Thank you. I had a And wonderful time talking to everybody. so thank you, ma'am. And in case कुछ query होंगी तो we would Surely, I connect would with be you very happy personally. to answer. Thank Thank you. you so much. Thank you. Bye.